नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ MVVM डिज़ाइन पैटर्न विथ रूम डेटाबेस। तो जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि रूम डेटाबेस क्या होता है। अगर आपने एंड्रॉयड में एसक्यूलाइट मॉड्यूल पे काम किया होगा तो आपको पता होना चाहिए। उसी का अपडेटेड वर्जन है जिनको हम रूम डेटाबेस कहते हैं, जो एंड्रॉयड एक्स में है। और MVVM पैटर्न जो है हमारा, वो मॉडल व्यू मॉडल, ये हमारे एक डिज़ाइन पैटर्न यूज करने वाले हैं एंड्रॉयड में। सो ये मैं आपको एक प्रीव्यू दिखाता हूँ इस एप्लीकेशन में, जिसमें हम दो स्क्रीन मैंने ले रखा है, एक इंसर्ट यूजर डेटा एंड यूजर डेटा लिस्ट। सो आप जो भी इंसर्ट करते हो वो एक लिस्ट में आपको। तो बेसिकली ये एक ऑफलाइन डेटाबेस के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नेम टाइप किया मैंने, डेजिग्नेशन टाइप किया एंड सबमिट कर दिया मैंने। ये आप ऊपर एक स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपको लिस्ट मिल रहा है यहाँ पे नेम और डेजिग्नेशन की। उसी तरीके से 2-3 लिस्ट मैंने इसमें किया। सचिन ग्राफिक डिजाइनर, सबमिट किया इसे। आप ऑर्डर वाइज देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा प्रीव्यू है। हम इस ऐप में इंसर्ट के लिए और डेटा को लिस्ट में दिखाना, इन दोनों मॉड्यूल को हम काम करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ डिजाइन पैटर्न इज MVVM एंड वी आर यूजिंग रूम डेटाबेस। तो दोस्तों बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी, नेम दे देते हैं डिजाइन नेम, प्रोजेक्ट नेम टेस्ट MVVM और रूम DB के टेस्ट ट्यूटोरियल में आप यहाँ से लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। जावा में करना है, कोटलिन में। मुझे जावा में करना है तो मैंने जावा को सेलेक्ट किया हुआ है। देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। Now it will take some time to create the project. Project is created. Now going to add some dependency. So click on the Gradle script, expand Gradle script, click on the build.gradle file, and we are going to add some dependency for Android lifecycle and room database. So I have already written in Notepad. So just copy रूम कंपोनेंट्स एंड लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स के लिए। तो ये डिपेंडेंसी यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ। यस, वी कैन ऐड एक्सटेंशन फॉर रूम वर्जन एंड आर्किटेक्चर लाइफ साइकिल वर्जन। सो add extension, copy this code, and we are going to paste in build.gradle module in below of this screen button, and just click on the sync button. Perfect, sync is completed. Now दोस्तों अब we are going to design of main XML file.
सो यहाँ पे इसे ले लेते हैं हम लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन चेंज करते हैं इसका वर्टिकल, परफेक्ट, टाइप यूजर डेटा लिस्ट, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ओके, मुझे फिर लीनियर लेआउट में इसको लेने की ज़रूरत है नहीं। एंड आई हैव डिवाइडेड weight layout in linear 100. This weight layout is 5. Perfect. Match parent, and the background is black and text color is white. And gravity center, gravity, not layout, gravity center, and size, text size 20 SP. Perfect. Now going to add a frame layout for fragments. So basically हम दो fragment लेंगे, एक यूजर लिस्ट के डेटा को इंसर्ट कराने के लिए एंड दूसरे यूजर लिस्ट को दिखाने के लिए रिसाइकलर व्यू. So we are taking a two frame layout in this design. So click on the frame layout and match parent, height is 0 dp, id container fragment first. Okay, and weight some 45 90 या एग्जैक्टली, ठीक है. सो ये हमारा आ गया. अब दूसरे स्क्रीन के लिए मैंने यहाँ से टेक्स्ट और फ्रेम लेआउट दोनों को ही कॉपी किया एंड जस्ट पेस्ट हियर एंड यूजर insert user data, and this will be a fragment 2. So XML का डिजाइन हो गया दोस्तों हमारा. Now going to create a repository for fragment. So just click on this folder name, package name, and new, going to package and give that name is fragment package create किया. Now going to create a two fragment, one for user info list and second one for user list data. So अभी new, click on the fragment blank ले लेते हैं और इसका नाम रखते हैं user list fragment. Just finish, click on the button, finish button, and another fragment we will take, new fragment blank, और इसका नाम रखते हैं यूजर
user info fragment, user info fragment। ओके, इसमें डेटा को इंसर्ट कराएंगे हम। ओके, we have already successfully created. Now going to design the user info fragment XML file. Just go, yeah, this one. We are going to do some design. So we will also take a linear layout, change orientation vertical, and perfect. We will take the edit text, match parent, wrap content, take a ID and edit name, hint, enter your name। अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं है, तो आप जितने भी फील्ड लेना चाहें ले सकते हैं। edit name, hint, and need to change the background. So background black, and this will be color hint, text color white लेते हैं, and color hint, text color hint भी white रखते हैं। विजुअल नहीं हो रहा ना, टेक्स्ट just remove this black. Anyway, take a margin top 10 dp। इसी तरीके से हम ये नेम के लिए हो गया, डेजिग्नेशन के लिए भी हम लेंगे कंट्रोल सी। आई थिंक इनको हटा देता हूँ, not need to change the color। So now this is for designation। तो edit design, enter your designation, okay। Now I'm going to take a widget button, match parent, wrap content, and the ID is submit button, text is submit, perfect। We also create a design layout of fragment user list, which is in a we are using just recycler view for listing, frame layout, linear layout, orientation vertical,
and recycler view, match parent, wrap content, RD, recycler view. ओके, परफेक्ट। सो दोनों फ्रैगमेंट की जो डिज़ाइन फाइलें हैं वो हमने डिज़ाइन कर लिया है। Now going to create a repository package and we will create a model class in repository package. So let's create a package name repository, new package repository. Perfect. Now going to create a user class. So going to click on the repository, right click on the new Java class and the name is user. Yeah, class is created. दोस्तों इसमें हम यूजर के इन्फॉर्मेशन के लिए एक एनोटेशन लेते हैं हम एंटिटी या एंड इसका टेबल नेम मैंने ले लिया यूजर इन्फो इसका टेबल नेम है। और इसमें प्राइमरी की क्या है, सो एनोटेशन प्राइमरी की नॉट नल होना चाहिए, नॉन नल, एंड द कॉलम इन्फो नेम इज दो हमारे पास हैं, एक यूजर नेम और यूजर डेजिग्नेशन। तो पहले का नाम हमारा यूजर नेम होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। सेकेंड नो नल कॉलम इन्फो नेम यूजर डेजिग्नेशन प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर डेजिग्नेशन। ओके दोस्तों, इसको एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं यूजर का। क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड जस्ट, या फिर आप चाहें तो ऑल्ट प्लस इंसर्ट से जनरेट किए, क्लिक ऑन द कंस्ट्रक्टर, सिलेक्ट दोनों वेरिएबल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ getter setter, right click, generate getter setter, click both variables and click on the OK button. Now user is created। दोस्तों हमारा मॉडल क्लास यूजर का क्रिएट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू create a DAO file for राइटिंग सम क्वेरी कि हमारे डेटाबेस में कन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा। अगर सेम नेम से कन्फ्लिक्ट होगा देन उसको वो रिप्लेस कर देता है। और गेट ऑल यूजर्स के लिए लिस्ट में दिखाने के लिए प्लस डिलीट क्वेरी, तो कुछ क्वेरी हमें लिखनी है यूजर डाउ फाइल में, और हमारा जो डाउ फाइल होता है वो इंटरफेस होता है। सो गोइंग टू क्रिएट अ डाउ फाइल इन रिपोजिटरी पैकेज, राइट क्लिक ऑन न्यू Java class and the name is user DAO। It is a interface class created। और DAO फाइल में फर्स्ट क्लास से पहले हमें एनोटेशन देना पड़ेगा DAO परफेक्ट। मैं आपको गोइंग टू राइट सम क्वेरी फॉर इंसर्ट
insert on conflict strategy dot replace, and the method name is void insert user का reference. Now insert का method create हो गया. Now going to write some query for get all users and delete. So query, इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ. Okay, query select star from यूजर इन्फो, जो हमने टेबल जो बनाया था यूजर क्लास में, ऑर्डर बाय यूजर नेम एग्जैक्टली, एंड लाइव डेटा भी हम यूज करने वाले हैं इसमें. दोस्तों मैं लाइव डेटा पे व्यू मॉडल, MVVM मॉडल, इनके डीप डेफिनेशन भी मैं किसी क्लास में एक बार बताऊंगा आप लोग. डेटा लिस्ट यूजर गेट ऑल यूजर्स, क्वेरी है दूसरा डिलीट के लिए, डिलीट की स्पेलिंग बताऊंगा, डिलीट फ्रॉम क्या हो रहा है, फ्रॉम यूजर इन्फो एंड void डिलीट ऑल का मेथड क्रिएट हुआ. ओके, तो दोस्तों डाव फाइल भी क्रिएट कर लिया हमने. नाउ गोइंग टू क्रिएट ए डेटाबेस क्लास एंड उस क्लास का नाम हम यूजर रूम डेटाबेस रखते हैं, जो रूम डेटाबेस को एक्सटेंड करता है. सो क्लिक ऑन द रिपोजिटरी पैकेज, राइट क्लिक, न्यू Java class, and the name is user room database. दोस्तों रूम डेटा हमारी जो क्लास होगी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी. सो वी नीड टू ऐड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर क्लास. पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजर database extend room database. Okay, before we have to enter on the database at database, जिस तरीके से हमने डाव फाइल में किया था या यूजर फाइल में किया था एंटिटी, उसी तरीके से हम डेटाबेस में डेटाबेस एंटर करते हैं. एंटिटीज हमारी किससे आ रही, यूजर से. टेक द यूजर क्लास डॉट क्लास, यूजर डॉट क्लास. ऑल्सो वर्जन क्या होगा इसका, नीड टू गिव अ वर्जन नेम 1. ओके, गोइंग टू क्रिएट ए room database instance and user DAO. So public abstract user DAO
user DAO, user DAO, private static user database, room database, and instance. Okay, static user room database, get database, final context, if instance equal to null, then instance equal to room dot database builder context get application context, and user room database dot class and the name is user database dot add callback room database callback. Need to create a callback. Callback dot build, and this is the return instance. We're going to create a private static room database dot callback this equal to new room database call and yes, Control O and open that method, and add new populate db async, where we're going to pass instance dot execute. Going to need to create a populate db async class. So going to create the class populate db async p, click on the repository package name and the Java class name, created,
and extend with async task. Async task uh, async task with void okay, and implement some method doing background. उसके बाद private final user DAO okay. And create a constructor public user database room database db user DAO equal to db dot user DAO, and in what we are going to do in background, so user DAO dot delete all. Perfect. So दोस्तों popular db sync is created now. एरर भी गायब हो गया यहाँ से. Now we are going to create a repository class for insert our data in room database. Just click on the repository package, new Java class, and the name is user repository. Yes, created. Private user DAO user DAO live data list of user all users. Okay, now create a constructor public user repository application user room database db equal to user room database डॉट database, और एप्लीकेशन को हम यहाँ एज ए कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं. यूजर DAO इक्वल टू db डॉट यूजर DAO and all users equal to user DAO dot get all users. कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया दोस्तों. नाउ पब्लिक लाइव डेटा लिस्ट ऑफ यूजर get
all users and return all users. Going to create a हमने जो insert delete और get all के लिए किया था उसी को हम ड्राइव कर रहे हैं इस वाली क्लास में. So we're going to do for insert. So public void insert user new insert async user DAO dot execute user Now we need to create an insert as in task class as a inner class. We have created. Now extend this class, extend async task user void okay. We have to need to take private user DAO async ओके. ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर क्रिएटर था हमारा. सो ये हो गया हमारा यूजर async DAO async इक्वल टू user DAO. Now we are going to create a implement method doing background, and here we go. User DAO async dot insert users. Okay, we need to take a final users. execute की स्पेलिंग गलत है. now it's working. so दोस्तों यूजर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है. now we're going to create the ViewModel class, user list ViewModel. so just create a package name is ViewModel. right click on the package name, new, and the class name. User list ViewModel. So we have created the ViewModel class, and now extend the Android ViewModel. so extend Android ViewModel, implement some method. We have to create a constructor matching superclass.
we have already created. Now initialize the value. Private user repository private live data of the list of user and all users in constructor file user repository equal to new user repository. कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन पास करते हैं एम ऑल यूजर्स इक्वल टू यूजर रिपोजिटरी डॉट गेट एम ऑल यूजर्स. Now need to create a public live data list of user get all user and return all users. ऐसे इंसर्ट के लिए भी पब्लिक void insert user create a constructor of user method to user repository dot insert, pass the user data. So finally we have created the ViewModel class. Now we are going to create already created in Fragment, but we need to code in Fragment class. Also we have to create a one adapter class and then we will code in main activity. So let's create. Okay, so now we are going to code in user info Fragment. So we have already created this class and add some variables. So let's create it. So first private one for view for view list, view info list equal to null. We have already declared the view. Second private and user list view model, जो अभी हमने मॉडल क्रिएट किया था उसके लिए create instance user list view model and we have taken two widgets, edit text and one button. So we have to declare this widgets in that. So edit text, first username and second one was user designation, small user designation. And button widget, we have taken a button for submit, insert your data. So button insert button need to typecast of all these widgets. So उससे पहले on create method में we have to create we have to initialize the ViewModel class. So user list ViewModel equal to ViewModel provider
it's already created ViewModel provider. Providers, not provider. Dot of caps lock is on. Dot of context get activity. Dot get dot get dot get user get this one dot get is not working. Why? Okay, now it will work. Yes, get user list ViewModel dot class. Okay, so ViewModel हमने initialize कर दिया. Now we're going to work on create view method. So user list, the name was view info list. Control C copy, just paste here. Equal to return value, which also view info list. Init view for typecasting. Create that method. And username equal to ViewModel view info list dot find view by id r dot id dot edit name. सेम कॉपी करता हूँ फॉर डेजिग्नेशन एंड बटन. User designation is edit design, and this insert button submit button. Okay, so typecast is completed. Okay, सेट ऑन क्लिक लिसनर भी ऐड करना पड़ेगा हमें बटन पे. सो इंसर्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस कॉन्टेक्स्ट make user info fragment implement Android on click listener. Okay, click on that OK button, and if v dot get id equal to r dot id dot submit, अगर ये आईडी हमारी मैच होती है ऑन द क्लिक ऑफ बटन, देन विल कॉल ए मेथड सेव इन्फो. सेव इन्फो मेथड कॉल होगा. नाउ गोइंग टू क्रिएट द सेम इन्फो मेथड इन यूजर इन्फो फ्रैगमेंट. क्लिक ऑन दैट. तो यहाँ पे हम कुछ वैलिडेशन भी लगाते हैं. अगर एम्प्टी डेटा जाए देन
we cannot insert data without widgets. So condition is if not text utils is empty, then user name dot get text to string. And if text utils is not empty, where user designation dot get text to string. What's wrong? Okay, to string. Okay. Okay, pass in the string variable string name equal to user name dot get text to string. Take a string designation design equal to user designation dot get text to string. User equal to new user. ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे क्लास का एंड पास the variable name and designation design. Okay, now user list ViewModel dot insert data of user. After insert is username dot set text and user designation dot set text empty. Yeah, else part toast get context fill all required field required field. Okay, so user info fragment is completed. Now we have to work on user list fragment. And before creating work on list fragment, we need to create an adapter class and once a child view. So let's create. So now we are going to create adapter class, but before we are going to work on a user list fragment. So click on user list fragment and add some instance for view. So let's create it. Where is the file? User list fragment? Yes. So private type का है user list view model. So private user list view model private view का
टाइप हमारा यूजर लिस्ट व्यू इक्वल टू नल। इनिशियलाइज करते हैं इसे। नाउ ऑन क्रिएट in method of on create just copy this and paste here. Okay, user list view equal to return type user list view okay. So set adapter user list view. Need to create user list view model. User list view model dot get all users dot observe. Context will be this. New observer list and the adapter we have to create adapter class. Adapter dot set what that is users. Okay, now going to create a adapter class, a user list adapter, and this will be adapter. Initialize will be null value. Create the class of list adapter. So उससे पहले एक हम पैकेज क्रिएट कर लेते हैं adapter class के लिए. Right click on new gen and click on the package and the name is adapter. Adapter package is created. Now right click on the adapter package and go to the new Java class file and the name is the user list adapter class. And extend recycler view dot adapter user list adapter dot user view folder. Now create user view folder. Implement that method. Implement method on create view folder, on bind view folder, get item count. Just click on the OK button. Okay, make user and create a constructor matching super class. Super. Okay, so take the layout inflator. So it is a private type, private final layout inflator. Instance is inflator.
private list of user users and just create the constructor of generate. Click on the constructor inflator. Need to pass context inflator equal to layout inflator from pass the context. Take the view equal to inflator dot inflate r dot layout dot child item parents dot false value. Okay, we have to create a child item design class. Import this class, create a layout resource file, and the name is okay. It's a constant type layout. Take a first text view and wrap content. ID is name text name. Okay, before taking, I think this इसको कॉपी कट कर लो. We have to create a linear layout. Match parent and the height is 50 dp. Orientation is vertical and the weight sum is 2. Now paste that code. Take a weight layout in that widget 1 and give it some margin 5 dp. Okay, again take another one and designation and change the text designation. Okay, perfect. Now match this layout. Okay, bottom top. Okay, and it will be a wrap content. So now हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया. चाइल्ड आइटम, so चाइल्ड आइटम user list adapter, just insert this child item. We'll get the view. This will be a new user view holder and this is the view context pass होगा इसमें. Okay, take a name, edit text, sorry, not text view. Text view name
and designation typecast name equal to item view dot find view by id name design equal to item view dot find view by id design okay, this will be users users dot size, and we are going to working on view bind view holder. So if users not equal to null, then user users dot get position holder dot name dot set text current dot get username. Same for designation dot design dot set text current dot get user designation. और else पार्ट में अगर एम्प्टी हुआ तो m users इक्वल टू holder dot name dot set text, and it will show no data. Need to create set word in binary folder. Okay, public void set words list of user user equal to users notify data change. अगर डेटा चेंज होता तो हम नोटिफाई भी करें. बस गेट आइटम ऑलरेडी वी हैव वर्कड बट need to change some code. And if users not equal to null, then return users dot size, else return 0. Okay, so now adapter class is already created, so going to user list fragment and we'll do some code.
create a set adapter class method. So just right click on that, create method set adapter, already created. इसे हम यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. हमारे पास रिसाइकलर व्यू था, रिसाइकलर व्यू इक्वल टू user list view dot find view id r dot id dot recycler view adapter equal to new user list adapter get activity. We have to pass recycler view dot set adapter recycler view dot set layout manager and the new linear layout manager get activity. नाउ हमने दोनों ही फ्रैगमेंट क्लास में कोड कंप्लीट कर लिया है. नाउ अब वक्त है हमें मेन एक्टिविटी में जाके इन दोनों फ्रैगमेंट को कॉल करना. सो जस्ट फ्रैगमेंट में हम क्या करना है, गेट फ्रैगमेंट मैनेजर, गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिंग ट्रांजैक्शन dot replace r dot id dot container fragment first, और इसमें हमारा new user list fragment dot कमेंट. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट फ्रैगमेंट के लिए है. सेकंड फ्रैगमेंट के लिए जस्ट इस कोड को कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो नीचे इसके एंड चेंज द फ्रैगमेंट टू, एंड ये हो जाएगा आपका यूजर इन्फो फ्रैगमेंट. Code is completed. So now it's time to test this code. मैं इसको रियल डिवाइस में टेस्ट करके दिखाता हूँ. ओके, तो नाउ कंप्लीट हो गया इस वीडियो को और आपने आउटपुट देख लिया. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको MVVM रूम डेटाबेस विद रेट्रोफिट वेब सर्विस से हम कॉल करेंगे API को, एंड देन सेव इन द डेटाबेस एंड मॉडल व्यू एंड व्यू मॉडल हम ये MVVM डिज़ाइन पैटर्न वी विल यूज. सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल. धन्यवाद.